को जैसा तू है साचे लख पारा। अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। रामकली महला पंजवा। तू दाना तू अबचल नाही, तू जात मेरी पाती। तू अडोल कदै डोल है नाही, ता हम कैसी ताती। एक एक तू ही, एक तू राया। त्यो कृपा ते सुख पाया। रहाओ तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम माणक लाला। तुम देवो तिल संक न मानो, हम पुंछो सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा। हम खेल सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूरन पूर है संपूरन, हम पी संग गाए। मिलत 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 मिल रहिया, नानक कह न जाए। रामकली महला पंजवा। कर कालता जब जा भुख वाजो नैनो, माथे वजैर बाबा। करनो मद बासरी बाजै, जिहवा तुन अगाजा। निरत करे कर मनुआ नाचै, आने कुगर साजा। राम को निरतकारी, पेखै पेखन हार दयाला। जेता सांझ सिंगारी रहाओ, अखार मंडली तरण सबाई। ऊपर गगन चंदोआ, पवन विचेला करत इकेला। जल तै ओपत होआ, पंच तत् कर पुत्रा कीना। किरत मिलावा होआ, चंद सूरज जो दोए जरै चरागा। जो कुंठ पीतर राखै, दास पातो पंच संगीता। एक पीतर साथै, पिन पिन होए पाव दिखावे। सबो निरारी पाखै, कर कर नित होवे दिन राती। कट कट वाजै तूरा, एक नचावे एक पवावै। एक आय जाय है होए दूरा। को नानक सो बहु न नाचै, जिस गुर पेट पूरा। रामकली महला पंजवा। ओंकार एक तुन एक राग अलापै। एका देसी एक दिखावे, एको रहिया व्यापै। एका सुरत एका ही सेवा, एको गुर ते जापै। पलो पलो रे कीरतनिया, राम रमा रामा गुन गाओ। छोड़ माया कै तंद सुआओ रहाओ। पंच बचित्र करे संतोखा, सात सुरा लै चालै। बाजा मान तान तय ताना, पाओ न बिगा कालै। फेरी फेर न होवे कभी, एक शब्द बद बंद पालै। नारदी नर हर जान हदूरै, कूंगर खड़क त्याग विसूरै। सहज आनंद दिखावे पावे, एह निरतकारी जन्म न आवे। जेको अपने ठाकर पावे, कोट माद एह कीर्तन गावे। साध संगत की जावो टेक, कह नानक तिस कीर्तन एक। रामकली महला पंजवा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया कोई अलाहै। कारण करम करीम कृपादार रहीम रहाओ। कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओड नील कोई सुपेद। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछै पिष्ट कोई सिर गिंदू। कह नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। रामकली महला पंजवा। पवनै मह पावन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। यह तो चलत पया रहाओ, अगली किछ खरब न पाई। रोवन हार पै ऊठ सिधाई, परम मौकै बंद बंद। सुपन पया पखलाए अंध, एह तो रचन रचिया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, न को मुआ न मरण जोग। न बिनसै अबनासी होग। जो ये जानो सो ये नाहे, जानन हारै को बल जाओ। कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरै ना आवे जाया। रामकली महला पंजवा। जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है।
फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म परम परम पायो, बड़े पाग साध संग पायो। बिन गुर पूरै नहीं उदार, बाबा नानक आखै एह विचार। राग रामकली महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात विखानै। 10 अष्टी मिल एको कहया, तापी जोगी पेद न लहिया। किंकरी अनूप वाजै, जोगिया मत वारै रे रहाओ। प्रथम वस्या सत का खेड़ा, रहते मह किछ पया दो तेड़ा। दोतिया अर्धो अर्ध समाया, एको रहया ता एक दिखाया। एक सूत परोए मणिए, गाठी पिन 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 तणिए। फिरती माला बहुबिध पाए, खिंचिया सूथ न आई थाए। चौमै एक मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। यो किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी के मन मीठी लागै। रहाओ दूजा रामकली महला पंजवा, तागा करके लाई थेगली। लाओ नाड़ी सुआ है अस्ति, अंबे का कर डंडा धरिया। क्या तू जोगी कर बह परिया। जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दुहाई। रहाओ गहरी विपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंदरा तारी। मांगै टूका तृप्त न पावै, नाथ छोड़ जाचै लाज न आवै। चलचित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की गुर गोपाला, नामै खिंथा नामै बस्तर। जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, यो जपिया नाथ दिन रहनाई। हुण पाया गुर गोसाई। रहाओ दूजा रामकली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किनै विलह डीठा। रहाओ निर्मल जोत अमृत हर नाम, पीवत अमर पै निहकाम। तन मन शीतल अगन निवारी, आनंद रूप प्रगटै संसारी। क्या देवो जा सब किछ तेरा, सद बलहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा, हो तेरा तू मैं मन बूठा। रामकली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव। सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर कहो सद बलिहारी। काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनर तूरे सतगुर। रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर। जाकै बंधन काटे राय, सो नर बौर न जोनी पाए। जाकै अंतर प्रगटियो आप, ताको नाही दुख संताप। लाल रतन तिस पाले परिया, सगल कुटुंब जन लै तरिया। ना किछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा। जत का देखो आप दयाल, कहो नानक पर मिलै रसाल। रामकली महला पंजवा, तिनकै छुटकी अपनी दारी, प्रभु की आज्ञा लगी प्यारी। जो किछ करे सो मन मेरे मीठा, ताहे अचरज नैनो डीठा। अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए, बुझ गई तृस निवारी ममता। गुरपूरै लियो समझाए। रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना, गुर पकड़ाए हर कह चरना। 20 बिसवे जा मन ठहराने, गुर पार ब्रह्म एक ही जाने। जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रा मेरे को सगल निवास। ना को दूत नहीं बहराई, गल मिल चाले एक कह पाई। जाको गुर हर दिए सूखा, ताको बहु न लागे दुखा। आपे आप सर्व प्रतिपाल,
ਨਾਨਕ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੈ ਕਰ ਲੋਕ ਦਿਰੜਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਪੰਡਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਤ ਰਹਾਉ। ਆਗੇ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਤਿਲਕ ਚਰਾਵੈ ਪਾਈ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਖਟ ਕਰਮਾ ਅਰ ਆਸਣ ਤੋਤੀ, ਪਾਗਟ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ। ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਵਿਪੂਤ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋਈ ਨਾ ਧਰਿਓ ਮੀਤ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਉਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ। ਚਰਤ ਬੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰ, ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਕੀ ਚੇਰ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਕੈ ਪਾਨੀ ਹਾਰ, ਜਾਕੋ ਮਇਆ ਪਈ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਸੈ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਜਾਮ ਰਹਾਉ। ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ, ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਪਵਨ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਬਰਨ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤਾਕੈ ਚਰਨ। ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪਤ ਧਿਆਨ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਤਿਨ ਦਾਨ। ਭਗਤ ਸੋਈ ਕਰ ਮਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਜਾਕੋ ਠਾਕਰ ਦੀਆ ਮਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਸ ਨਿਵਾਸ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ, ਜੋ ਕਮਾਵਨ ਸੋਈ ਭੋਗ। ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੈ ਹੀ ਬੰਦ, ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਮਾਇਆ ਤੰਦ। ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਜਨੀ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਰਹਾਉ। ਤਨ ਤਨ ਕਲਤ ਮਿਥਿਆ ਬਿਸਥਾਰ, ਹੈ ਵਰ ਗੈ ਵਰ ਚਾਲਨਹਾਰ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਭ ਕੂਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਜਾਸੀ ਤੂਰ। ਪਰਮ ਪੁਲੈ ਬਾਧ ਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਰਹਿ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੈਂ ਦੇਹ ਬਿਰਧਾਨੀ, ਸਾਕਤ ਇਹੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਦਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਤੂਠਾ, ਖਟ ਖਟ ਰਮਈਆ ਤਿਨ ਹੀ ਡੀਠਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਅਚਰੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਕੇਲ ਕਰੈ ਸੰਤ ਹਰ ਲੋਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਵਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਤੈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਾਉ। ਊਹਾ ਸਿਮਰੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਬਿਰਲੇ ਪਾਵੈ ਓ ਬਿਸਰਾਮ। ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ, ਨੇਚਲ ਆਸਨ ਬੇਸਮਾਰ। ਡਿਗ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਤੋ ਨ ਤਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਇਹ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ। ਪਰਮ ਪੈ ਮੋਹਨਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਆਪੈ ਗੁਪਤ ਆਪੈ ਪਾਸਾਰ। ਜਾਕੈ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਸਵਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਬਿਸਮਾਦ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੇਟਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਤੋ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤ ਡੰਡਾਉਤ। ਇਹ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀ, ਜਾਕੀ ਓਟ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਾਸ। ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਖਿਆ ਪੜਦਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਕਬੋ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਦੀਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਭਏ ਦਿਆਲ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਤਾਸ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੰਤੈ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਗਿਰੈ ਰਾਜਮਾਲ, ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਬਿਖੈ ਜੰਜਾਲ। ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਜਾਣ ਸਭ ਛਲੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ ਮੀਤਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹਾਉ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਮ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਾਟੀ ਦਾਮ।
गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहाँ उहाँ तेरो उजल मुखा। कर कर थाकै वडे वडेरे, किन्ही ना किए काज माया पूरै। हर हर नाम जपै जन कोय, ताकि आसा पूरन होए। हर भगतन कै नाम आधार, संति जीता जन्म अपार। हर संत करै सोई परवान, नानक दास ताकै कुर्बान। रामकली महला पंजवा। संचय दरब देह दुख लोग, तेरे काज न अवरा जोग। कर अहंकार होए वरतै अंध, जम की जेवड़ी की तू आगे बंद। छाड़ विडानी तात मूड़ै, इहा बसना रात मूड़ै। माया के माते ते उठ चलना, राच रहियो तू संग सुपना रहो। बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध। तैत्या बिस्तवा सिंचै माए, बिरद पया छोड़ चलियो पछताए। चिरंकाल पाई दुर्लभ देह, नाम बिहोनी होई केह। पशु प्रेत मुगद ते बुरी, तिसै न बूझै जिन एह सिरी। सुन कर तार गोबिंद गोपाल, दीना दयाल सदा कृपाल। तुम्हें छडावै छुटकै बंद, बखस मिलाव हो नानक जग अंध। रामकली महला पंजवा। कर संजोग बनाई काछ, ते संग रहियो या ना राच। परत पारै निज सार समारै, अंत की बार उठ सिधारै। नाम बिना सा झूठ परानी, गोबिंद भजन बिन अवर संग रातै। ते सब माया मूठ परानी रहो, तीरथ नाई ना उतरस मैल। कर्म तरह सब हों महफैल, लोक पचारै गत नहीं होए। नाम बिहूणै चल सह रोए। बिन हर नाम ना टूटस पटल, सोदै शास्त्र सिमरत सगल। सो नाम जपै जिस आप जपाए, सगल फला से सुख समाए। राखन हारै राखो आप, सगल सुखा पर तुम्हारे हाथ। जित लाभ है तित लागह स्वामी, नानक सहब अंतर जामी। रामकली महला पंजवा। जो किछ करै सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना। डोलन तै चौका ठहराया, सत महल सत समाया। दुख गया सा रोग गया, पकी आज्ञा मन मेहमानी। महापुरख का संग पया रहो, सगल पवित्र सर्ब निर्मला। जो वरताए सोई भला, जय राखै सोई मुक्त थान। जो जपाई सोई नाम, अरसर तीरथ जय साध भगतर है। तब बिकुंठ जय नाम उचर है। सर्ब आनंद जब दर्शन पाइयै, राम गुणा नित नित हर गाइयै। आपै कट कट रहिया व्याप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप। कपट खुलानै परम नाठै दूर, नानक को गुर पेटै पूरै। रामकली महला पंजवा। कोट जाप ताप विश्राम, रिद बुध सिर सुर ज्ञान। अनक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमख हृदय वसै। हर कै नाम की वडियाई, कीमत कह न जाई रहाओ। सूर बीर तीर मत पूरा, सहज समाध तुन गहर गंभीरा। सदा मुक्त ताकै पूरै काम, जाकै हृदय वसै हर नाम। सगल सुख आनंद रोग, समदर्शी पूरन निर्जोग। आए न जाए डोलै कत नाही, जाकै नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपियै उतरै चिंद। नानक को गुर दिया नाम, संतन की टहल संत का काम। रामकली महला पंजवा। बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ, आज्ञा मिली निथावै थाओ। गुर पूरै की चरणी लाग, जन्म जन्म का सोया जाग। हर हर जप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासै। पाओ जल पार परला रहाओ। नाम निदान ते आए मन अटल, तां छूटै माया कै पटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो, तां तेरा होए निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा। सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग। छोड़ सियाणप बहु चतुराई,
मन बिन हर नावै जाय न काई, दयाधारी गोबिंद गुसाई, हर हर नानक टेक टिकाई। रामकली महला पंजवा। संत कै संग राम रंग केल, आगे जमस्यो होए ना मेल। अहंग बुद्ध का पया विनाश, दुर्मत होई सगली नास। राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म काढ़ अहंकार न काजै। कुशल सेती कर जा है पंडित रहाओ, हर का जस निद लिया लाभ। पूरन पए मनोरथ साब, दुख नाठा सो कर में आया। संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान। तिस जन होए सगल निदान, संतोख आया मन पूरा पाए। फिर मांगन का है जाय, हर की कथा सुनत पवित। जेहवा बकत पाई गत मत, सो परवान जिस हृदय वसाई। नानक ते जन उत्तम पाई। रामकली महला पंजवा। कहो हर पकरी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ। कहो नानक जो त्याग दई, तब हो चरणी आए पई। सुन संतो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई। गुर पूरा पेटत उधार, रहाओ जब उसको कोई आवे मान। तब आपस ऊपर रखे गुमान, जब उसको कोई मन पर हरे। तब हो सेवक सेवा करे, मुख बेरावे अत ठगावे। एकत ठौर ओह कही ना समावे। उन मोह बहुत ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचै सो कछ ना लहै। इसे त्याग सत संगत करे, वडभागी नानक ओतरै। रामकली महला पंजवा। आत्म राम सर्व मह पेख, पूरन पूरहिया प्रभ एक। रतन अमोल हृदय मह जान, अपनी वस तू आप पछान। पी अमृत संतन प्रसाद, वडै पाग होवै तो पाइयै। बिन अपनी वस तू आप पछान। पी अमृत संतन प्रसाद, वडै पाग होवै तो पाइयै। बिन जेवा किया जाने स्वाद रहाओ। 8-10 बेद सुनै कह डोरा, कोट प्रगास ना दिसै अंधेरा। पशु प्रीत कास संग रचै, जिस नहीं बुझावै सो कित बिद बूझै। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संघान। बिगस बिगस अपना प्रगावै, नानक तिन जम नेड़ ना आवै। रामकली महला पंजवा। दीनो नाम कियो पवित, हर तन रास निरास एह बित। काटी बंद हर सेवा लाए, हर हर पत राम गुण गाए। बाजै अनहद बाजा रस करस, गुण गावै हर जन। आपै गुरुदेव निवासा रहाओ, आए बनियो पूर बला पाग। जन्म जन का सोया जाग, गई गिलान साध कै संग। मानता रातो हर कै रंग, राखै राखन हार दयाल। ना किछ सेवा ना किछ काल, कर किरपा कीनी दया। बूढ़ दुख में काढ़ लिया, सुन सुन उपजो मन में चाओ। 8 पैर हर कै गुण गाओ, गावत गावत परमगत पाई। गुर प्रसाद नानक लिव लाई। रामकली महला पंजवा। कौड़ी बदलै त्यागै रतन, छोड़ जाए ताहू का जतन। सो संचय जो होछी बात, माया मोहया टैडो जात। अपागै तै लाज नाही, सुख सागर पूरन परमेश्वर। हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार जाना, नाम सुनत जन बछुड साना। माया कारण सद ही चूरै, मुख मुख कबह न उस्तत करै। निरपौ निरंकार दतार, तिस्यो प्रीत न करै गवार। सब साहा सिर साचा शाहो, बेमोहताज पूरा पातशाहो। मोह मगन लपटियो परम ग्रह, नानक तरियै तेरी मेहर। रामकली महला पंजवा। रैन दिन जपो हर नाओ, आगे दरगह पावो थाओ।
सदा आनंद न होवे सोग, कबो न व्यापै हਉ मह रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिसमन बिसम पै बिसमादा। परम गत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मन देखो सगल विचार, ना बिना कह सकै न तार। सगल उपाव न चालै संग, पौजल तरियै प्रभ कह रंग। देही तोय न उतरै मैल, हਉ मैं व्यापै दुबदा फैल। हर हर आखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए। कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन तै कबो न बिसर गोपाल। तेरे दास की होवा तूर, नानक की प्रसरधा पूर। रामकली महला पंजवा। तेरी शरण पूरै गुरदेव, तुद बिन दूजा नाही कोय। तू समरथ पूरन पार ब्रह्म, सो त्याय पूरा जिस करम। तरन तारण प्र तेरो नाव, एका शरण गही मन मेरे। तुद बिन दूजा नाही ठाव रहाओ। जप जप जीवा तेरा नाव, आगे दरगह पाओ ठाओ। दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सै राचै हर नाय। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गुरपूरै की निर्मल रीत। पौ पागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै। कोच जन्म कै काटै फाहै, पाया लाभ सचा तन लाहै। टोट न आवै खुट पंडार, नानक भगत सो है हर द्वार। रामकली महला पंजवा। रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान। सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवालै होता। मेरे राम को पंडार, खात खर्च कछ तोट न आवै। अंत नहीं हर पारा वार हाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। अनहद बाणी पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा ते आसन, केवल ब्रह्म पूरन तह बासन। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तह हरख न सोग न जन्म न मरत। कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक कर दास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। रामकली महला पंजवा। महिमा न जानै वेद, ब्रह्म नहीं जानै पेद। अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गत आप जानै, सुन सुन अवर वखानै रहाओ। शंकरा नहीं मानै पेव, खोजत हारै देव। देवया नहीं जानै मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल, आप बिछोरै आपे मेल। एक परमै एक भगति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखै आखी। नहीं लेप तिस पुण्य न पाप, नानका प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा। किछु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किछ ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म, कछु न जानो कैसा कर्म। ठाकर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा और ना कोई। भूलो चूक प्रभ तेरे रहाओ। रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रगास, बिखै ब्याद कै गाँव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन मह टेक। सुन सुन जीवो मन मह सुन सुन जीवो मन है विश्राम। पाप खंडन प्र तेरो नाम। तू अगनत जी का दाता, जिसै जनावै तिन तू जाता। जो उपजो तिस तेरी आस, सगल अराधै प्रगुणतास। नानक दास तेरै कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरवान। रामकली महला पंजवा। राखन हार दयाल, कोट पवखंडै निमक ख्याल। सगल अराधै जंत, मिलिए प्रगुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ, पूरन परमेश्वर स्वामी कट कट। राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट। बंधन ते हुई छोट, हृदय जप परमानंद। मन माह पय आनंद, तारण तरण हर शरण।
जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार। ऊंचे ते ऊंच पार सोमत सार जित हर समरिजै। कर कृपा जिस आप दीजै सोक सहज आनंद हर नाव। नानक जपिया गुर मिल नाव। रामकली महला पंजवा। सगल सियान बछाड कर सेवा सेवक साज। अपना आप सगल मिटाए मन चिंदै सोई फल पाए। हो सावधान अपने गुर स्यो आसा मनसा पूरन होवै। पावै सगल निदान गुर स्यो रहाओ। दूजा नहीं जानै कोय सतगुर निरंजन सोए। मनुख का कर रूप न जान मिली निमान मान। गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सबला है। हर का नाम माग निदान ता दरगह पाव है मान। गुर का बचन चब मंत एहा भगत सार तत। सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल। रामकली महला पंजवा। होवै सोई पल मान अपना तज अभिमान। दिन रैन सदा गुण गाओ पूरन एही सुआओ। आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई। गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर। गुर कै चरण नमस्कार पौजल उतर है पार। देवन हार दतार अंत न पारावार। जाकै कर सर्ब निधान राखन हार निदान। नानक पाया एह निदान हरै हर निर्मल नाम। जो जपै तिसकी गत होए नानक करम प्राप्त होए। रामकली महला पंजवा। दुर्लभ देह सवार जाहे न दरगह हार। हालत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला ले छडाई। राम कै गुण गाओ हालत पलत हो है दोवै। सोहले अचरज पुरख त्याव रहाओ। ऊठ बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप। बैरी सब होवै मीत निर्मल ते दरा होवै चीत। सव तै उत्तम एह कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म। हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जं का उतरह पार। पूरन तेरी होवै आस जं की कटिए तेरी फास। गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज समीजै। रामकली महला पंजवा। जिसकी तिसकी करमान आपन लाहे गुमान। जिसका तू एक तिसका सब कोय तिसै आराध सदा सुख होए। काहे परम पर मैं बेगानै नाम बिना किछ काम न आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछानै रहाओ। जो करे सोई मान लेह बिन मान रल होवै खेह। तिसका पाना लागै मीठा गुर प्रसाद विरलै मन ऊठा। वे परवाह अगोचर आप आठ पैर मन ताको जाप। जिस चित आए बिनसै दुखा हालत पलत तेरा ऊजल मुखा। कौन कौन उदरै गुण गाए गणन न जाई कीम न पाए। बूढ़त लोह साध संग तरै नानक जिसै प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा। मन माहै जाप भगवंत गुरपुरै ए दीनो मंत। मिटै सगल पै त्रास पूरन होई आस। सफल सेवा राम गुरदेवा कीमत किछ कह न जाई। साचै लख पेवा रहाओ। करन करावन आप तिसको सदा मन जाप। तिसकी सेवा कर नीत सच सहज सुख पावै मीत। साहिब मेरा अत पारा कन मैं थाप उथापन हारा। तिस बिन अवर ना कोई जन का राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनीजै अपने सेवक को दर्शन दीजै। नानक जापी जप जाप सव तै ऊच जाका प्रताप। रामकली महला पंजवा। बिरथा परवासा लोक ठाकुर पर तेरी टेक। अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटै गुणतास। एको नाम ते आए मन मेरे कार्य तेरा होवै पूरा। हर 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 गुण गाए मन मेरे रहाओ।
तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओट सदैव, जाकै कीनै है जीव। सिमरत हर करत निधान, राखन हार निदान। सर्व की रेण होईजै, आप मिटाए मिलीजै। आन दिन त्याइयै नाम, सफल नानक के काम। रामकली महला पंजवा। कारण करम करीम, सर्ब प्रतपाल रहीम। अल्लाह अलख अपार, खुद खुदाए वड बेसमार। ओ नमो भगवंत गुसाई, खालक रव रहिया सर्ब ठाई। रहाओ जगन्नाथ जग जीवन माधो, पौ पंजन हृदय मह राधो। रिखी केस गोपाल गोबिंद, पूरन सर्बतर मुकंद। मेहरवान मौला तू ही एक, पीर पैगंबर शेख। दिल का मालक करे हाक, कुरान कतेब ते पाक। नारायण नर हर दयाल, रमत राम कट कट आधार। वासुदेव बस्त सब ठाए, लीला किच लखी न जाए। मेहर दया कर करने हार, भगत बंदगी देह सिरजनहार। कहो नानक गुर खोए परम, एको अल्लाह पार ब्रह्म। रामकली महला पंजवा। कोट जन्म कै बिनसै पाप, हरह जपत नाही संताप। गुर कै चरण कमल मन वसै, महाविकार तन तै सब नसै। गोपाल को जस गाओ प्राणी, अकथ कथा साची प्रपूरन। ज्योति ज्योत समाणी रहाओ, तृष्णा भूख सब नासी। संत प्रसाद जपया अविनाशी, रैन दिन स प्रभ सेव कमानी। हर मिलनै की एह निशानी, मिटै जंजाल होए प्रभ दयाल। गुर का दर्शन देख निहाल, परा पूर्बला कर्म बण आया। हर कै गुण नित रसना गाया। हर कै संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान। दास की रेण पाए जे कोय, नानस किसकी परमगत होए। रामकली महला पंजवा। दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय हर ध्यान। तूर संतन की मस्तक लाए, जन जन की दुर्मत मल जाए। जिस पेटत मिडै अभिमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे। कर कृपा पूरन भगवान रहाओ, गुर की कीरत जपिए हर नाओ। गुर की पत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान। गुर का शब्द सत कर मान। गुर बचनी संसर सुख दुख, कदै न व्यापै तृष्णा भूख। मन संतोख शब्द गुर राजै, जप गोबिंद पढ़दै सब काजै। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद। गुर चरनी जाका मन लागा, नानक दास तिस पूरन पागा। रामकली महला पंजवा। जिस किस पर वासै बिचरै पवन, मोड़ मुगद तेरा संगी कवन। राम संगी तिस गत नहीं जानै, पंच बटवारै से मत कर मानै। सो कर सेव जित उदरै मीत, गुण गोविंद रवियह दिन राति। साध संग कर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानै अहंकार अर वाद। तिरपत न आवे बिख्या साध, परमत परमत महा दुख पाया। तरी न जाई दोतर माया, काम न आवे सो कार कमावे। आप भी जापै ही खावे, राखन को दूसर नहीं कोय। तो निसत रह जो कृपा होए, पतित पुनीत पर तेरो नाम। अपने दास को की जय दान, कर कृपा प्रगत कर मेरी। शरण गही नानक पर तेरी। रामकली महला पंजवा। एह लोक सुख पाया, नहीं पेट धर्म राया। हर दरगह शोभावंत, फुन गर्भ नाही बसंत। जानी संत की मितराई, कर कृपा दीनो हर नामा। पूरब संजोग मिलाई रहाओ, गुर कै चरण चित लागा। तन तन संजोग सभागा, संत की दूर लागी मेरे माथै। किल विख दुख सगलै मेरे लाथै। साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध प्रानी। जन का सफल दरस डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूठा।
मिटाने सौ कल कलेस, जिस तै उपजै तिस मह प्रवेश। प्रगटै अनूप गोविंद, प्रपूरै नानक बख्शिंद। रामकली महला पंजवा। गौ को चारै सार दूल, कौडी का लख हुआ मूल। बकरी कौ हस्ती परत पालै, अपना प्रभ नदर निहालै। कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे, बरन न साकों बहु गुण तेरे। रहाओ दीसत मास ना खाए बिलाई, महाकसाब छुरी सट पाई। करणहार प्रभु हृदय ऊठा, फाथी मछली का मांस ना खाए बिलाई। महाकसाब छुरी सट पाई, करणहार प्रभु हृदय ऊठा। फाथी मछली का जाला टूटा, सूकै काष्ठ हरै चलूल। ऊँचे थल फूलै कमल अनूप, अगन निवारी सतगुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, अकिरत कणा का करे उधार। प्रा मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाय। चरण कमल नानक सरनाई, रामकली महला पंजवा। पंच सिंह राखै प्रमार, दस बिगियाड़ी लई निवार। तीन आवरत की चूकी केर, साध संग चुकै पे फेर। सिमर सिमर जीवा गोबिंद, कर कृपा राखियो दास अपना। सदा सदा साचा बख्शिंद रहाओ, दाज गए तरण पाप सुमेर। जब जब नाम पूजै प्रपैर, आनंद रूप प्रगटियो सवथान। प्रेम पत जोरी सुखमान, सागर तरियो बाछर खोज। खादना खेद न पायो नह पुनः रोज। सिंध समायो कटकै माहै, करणहार को किछ अचरज ना है। जो छूटो तो जाए पयाल, जो काड्यो तो नदर निहाल। पाप पुन हमरे वस ना है, रसक रसक नानक गुण गाहै। रामकली महला पंजवा। ना तन तेरा ता मन तो है, माया मोह व्याप्या तो है। कुदम करे कागद ज्यो छेल, अचिंत जाल काल चक्कर पेल। हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जब संग सहाई। गुरमुख पावै साचत ना रहाओ, उन्हें काज न होवत पूरै। काम क्रोध मद सद ही चूरै, करै बिकार जियर कै ताई। गाफल संग न तसुआ जाई, तरत मोह अनक छल जानै। कौडी कौडी को खाक सिर छानै, जिन दिया तिसै न चेतै मूल। मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जपै दयाल। ए मन होआ सादरवाल, हस्त कमल डर लीनो लाए। नानक साचै साच समाए, रामकली महला पंजवा। राजा राम की सरनाए, नरप पोए गोबिंद गुण गावत। साध संग दुख जाए रहाओ, जाकै राम बसै मन माही। सो जन दुतर पेखत नाही, सगलै काज सवारै अपने। हर हर नाम रसन नित जपनै, जिसकै मस्तक हाथ गुर तरै। सो दास अदेसा काहे करै, जन्म मरण की चूकी कान। पूरै गुर ऊपर कुर्बान, गुर परमेश्वर पेट निहाल। सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै। साध संग सो पव जल तरै, अमृत पियो साध प्यारै। मुख उज्जवल साचै दरबारै, आनंद करहो तज सगल बिकार। नानक हर जप उतरो हो पार। रामकली महला पंजवा। ईदंते बिसंतर पागै, माटी को जल दह दिस त्यागै। ऊपर चरण तले आकाश, काट मह सिंध कियो परगास। ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै। आठ पैर मन ताको जाप रहाओ, प्रथमै माखन पाछै दूध। मैलू किनो साबन सुध, पैते निरपो डरता फिरै। होंदी को अणहोंदी हिरै, देही गुप्त विदेही दिसै। सगल साज करत जगदीसै, ठगण हार अण ठगदा ठागै। बिन वखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारै कोय, नानक ताकी परमगत होय। रामकली महला पंजवा।
जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभ नाही आन बिया रहाओ। पुत कलतर लक्ष्मी दिसै, इन मह किछु ना संग लिया। बिखै ठगौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया। पुरब कमाने छोड़ै नाही, जमदूत ग्रसियो महापया। बोले झूठ कमावे अवरा, तृष्णा बूझै बहुत होया। असाध रोग उपजिया संत दुखन, देह बिनासी महाखया। जिन्हें निवाजै तिन्ही साजै, आपै कीनै संत जया। नानक दास कंठ लाए राखै, कर कृपा पार ब्रह्ममया। रामकली महला पंजवा। ऐसा पूरा गुर दियो सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाओ। दर्शन पेकत होए निहाल, ताकि दूर काटै जमजाल। चरण कमल बसै मेरे मन कै, कारज सवारै सगलै तन कै। जाकै मस्तक राखै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतित उदाहरण कृपा निदान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै बिकार बिनसै अभिमान। एक त्याइयै साधकै संग, पाप बिनासै नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रव रहिया गुणतास। दरस देह धारो प्रभयास, नित नानक चितवै सच अरदास। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रव रहिया गुणतास। दरस देह धारो प्रभ आस, नित नानक चितवै सच अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅੰਗ 882 ਟੂ ਅੰਗ 901, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਂਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ completed Viakhya last week until Ang 884. Today we read from 882 to 900. We completed last week Viakhya at 884. And we stopped at the 6th Shabd by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Today we will be starting Viakhya at Ang 884. 7th Shabd by Guru Arjan Dev Ji, Ramkali Mahla Panjma. Now before we start Viakhya, just to share certain observations. See, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ tells us that he is ਨਿਰੰਕਾਰ, without akar, without form, and he is everywhere. He is Ramya Hoya, he is everywhere. He is Kat Vasi, he is in all of us. And every pore of the universe, God is present. Even when we think, for example, there's a vacuum
no life can exist there. Bani tells us in Raag Maru, Ja jape ki thahu nahi, so karta parpur samahi. We think there's nothing there, but God is still present there. But you cannot see Him because He is formless, and you have not reached a level of avastha where you can see His jyot everywhere. You have to reach that level of avastha. So, since God is formless, when we are doing Simran, when we want to connect with Him internally, who do you connect with? He is without form. We just connect with empty air. There must be a focus of your prayer, there must be a focus of your love, by which you hope. When we are told in Japji Sahib, for example, Guruji poses a question, okay, in the fourth body. फिर के अगे रखिए जिस दिशा दरबार मोह के बोलन बोले जत सुन तरे प्यार, where we can get your love. And we are told Amrit Vela, Sach now, Vadiyai Vichar. We are told this, we must do these things to attract His love, His grace upon you. And when He wishes to exercise and bless you with His grace and His mercy, He then reveals Himself in the form of His Jyot. He reveals His Jyot, Guru Sakhi Jyot Pragat Hoye. And that is the ultimate of journey by the Sikh. At Ang 204 we are told, Tola tar tole sukh sagle, bin har dar sabo hi thora. He said, I've tried everything, but anything which is below getting your darshan is still not complete yet. जो तेरे दर्शन हो गए ना, ज्योत दे दर्शन हो गए अंदरों, then I can say that my spiritual journey has reached its climax. There is no end to it because He is infinite. He will still keep on giving you more and more Brahma Gyan. Brahma Gyani ka Bhojan Gyan. You see more and more enlightenment about Him even after seeing His Jyot. But the journey can be said to be at its climax when you start seeing His Jyot inside, and with His grace you see His Jyot everywhere. So the focus of your prayer, because He is formless, cannot be on anything form. You cannot sit down, close your eyes and hope to look at a photograph of, say, Guru Nanak Dev Ji or a drawing of Guru Nanak Dev Ji. It cannot be of any form. So Guru Bani tells us that your love, your focus should be on Bani. At Ang 661, Guru Amar Das Ji tells us, Panat Nanak kare bichar, Sachi Bani so tare pyar, Tako pave mokh dwar. So Sachi Bani de naal pyar karna. And whatever is in Guru Granth Sahib Ji is Sachi Bani. At Ang 312 in Gaudi Ki War Mela Chautha, Guruji says, Nanak ape mel laye, jisnu shabd laye pyar. Jisnu shabd de naal pyar pੈ jawe na, he will take over. He will then lead you on to the journey where he will eventually result in union with Him. So pyar pauna Bani naal is very, very important, because it is all the play of Nirankar, and this Bani, which is Sachi Bani, is actually in essence Eda Tat Nirankar. That's why we are told in Gujari Ki War Mela Tija, Wawa Bani Nirankar hai, is Jevad Avarna Koe. And in Slok Varante Vadik, we are told by Guru Ramdas Ji, even the Satguru, whose essence is Bani, is actually Nirankar himself. Wawa Satguru Nirankar hai, jis ant na paravar. So it's all a play of Nirankar. We are all in a car in form. We cannot attach ourselves to anything in form. We attach ourselves to Bani. Our love, our focus is on Bani. And once that love of Bani becomes crystallized with His grace, He will then reveal Himself, manifest Himself in the form of Jyot. And when you get His darshan, your journey is complete. That's why you find and when the journey is complete, that's why when we find the 57th slok of Slok Melanoma, in all the sloks you have the word Nanak.
In the 57th slok, you don't have the word Nanak, because usse darshan ho jande hai. And in the 57th slok of Slok Melanoma, you will find the word Nanak, the signature Nanak is not used there because there is darshan really. And so coming to tonight's Vyakhya, slok number 7 by Guru Arjan Dev Ji. In this Shabd number 7, Guruji uses the imagery of dancing. In Punjabi, nirta kende hai. In fact, Guru Amar Das Ji tells us in one of his shabds, Naach re man gur ke aage. Sada man nachda hi rehda. All of us are dancing with our eyes, with our ears, our tongue, and our various organs of the body in some form or other. The entire world is dancing and moving in a rhythm which is determined by God. Now this dancing, this movement, this flux only becomes stilled when you unite internally with the Satguru, with the Shabd in your mind. ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, then you become still. And when the mind is still, only then will God manifest Himself. So long as you are running around, your mind is running around, is full of flux. Even though your body may be still, but your mind is still in flux, He will never come. Because He's in perfect saj, He's in poise. And He's in Son Samad. And He only manifests Himself when your mind is still. So Guruji talks about the various organs of the body dancing, and in the final part of the Shabd, Guruji says, when the dancing stops, the dancing will stop when one meets and unites with the Satguru in the form of Shabd. So Guruji starts the Shabd by telling us, Kar kar tal pakhavaj naino mathe vajer baba. See, instead of using the physical dancing, using shene, kungru, kar kar tal, ਆਪਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਾਲ ਬਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੈਣਾ ਬਣਾ, ਸਿੰਬਲਸ, ਪਖਾਵਜ ਨੈਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ, ਤਬਲਾ ਬਣਾ, make it into a tabla. Matha vajayara baba. In other words, instead of using physical dancing to reach out to God, let the dancing be with organs of your body and slowly get that dancing to stop with Shabd. Matha vajayara baba ate damag di rabab vaja. Karno mad basri banjai. Kanna de vich mad means mithi. Mithi bansri, the flute. Let the sweet music of the flute resound in your ears. Jeva tona gaja, and let your tongue listen to the sweet melody of his tona, his mystical sound current of the Shabd. Nirta kare kar manua nache apne kunkar saja. And let the instruments all be of your body be used to let your mind dance in accordance with His hukam. Nirta kare kar manua nache ane kungar sanja. Ram ko nirtakari. So this dancer, Guruji says, is not a normal dancer. He is a dancer of the celestial Lord. Ram ko nirtakari. A Prabhu da naach karn wala man vich. And pekhe pekhan har diyala jeta saaj singari. Te ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਜ, the one who has put the instruments together and put his orchestra of the world together, he sees the dancing going on in the world. Pekhe pekhan har diyala, and he's always diyal, very merciful. Jeta saaj singari raho. Akhar mandali taran sabai upar gagan chandova. Now, akhar mandali, akhar is an arena. We are in like a world arena, is like a wrestling bout. Akhar mandali taran sabai. And on top of this arena, there is a taran. The entire world is like an arena. And upar gagan chandova. And on top is the sky, like a canopy overhead.
Pavan vichola kart ekela, jalte upat hova. And pavan vichola, this body, in this body, the pavan, air is the one which is the vachola, which allows you to live. Kart ekela, and it also keeps you separated from different bodies, the air. You, for example, cannot start breathing from somebody else's lungs. You have to use your own lungs to breathe and keep alive. Pavan vichola kart ekela, jalte upat hova. And from water, he created all beings, all matter. Panch tatkar putra kina. See, as I said, this is Raag Ramkali. Raag Ramkali was used mostly by the mystics, by the pandits, by the learned Brahmins, by the yogis, and by the Siddhs. So you find shabds of a very high avastha being explored here. Not that the other shabds are of lower avastha, but it's just that very difficult issues relating to God are used in a very mystical sense here. Panch tatkar putra kina kirt milava hova. And Panch tatkar putra, he has created the puppet of the body from 5 elements. Kirt milava hova. And whatever was your earlier karmas, that will determine in what house you are born, who is the company you keep, who are your parents, who are your relatives. Kirt milava hova. Chand sur do jare charaga. The sun and the moon are the lamps which shine forth in the world. Chokut Peter rakhe, and they shine on the 4 corners of the world. Chokut Peter rakhe. Panch pato, 10 pato, panch sangita, ek Peter sate. Now 10 pato in this body, we have 5 gyan indre, 5 karm indre, daswa. 10 pato means actually dancing girls, the 5 senses of the body and the Gyan Indriya and the Karam Indriya, Nacharaya. Panch Sangita, and Jede Panch Sangitna, Jede Kam Kro Lomohan Karva, they keep on dancing, make human dance. Ek hai Peter Sathe, ek Srir de Veche Sare Vasraya. Pin pin hoye pav dikhave sabo nirari paake. And all dance according to their own karmas, according to their own passions. Pin pin. ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰ ਹੋਏ ਭਾਵ ਦਿਖਾਵੇ ਸਭੋ ਨਿਰਾਰੀ ਪਾਖੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰ ਕਰ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਟਕਟ ਵਾਜੇ ਤੂਰਾ and in every body there is dancing going on, there is flux going on day and night. ਕਟਕਟ ਵਾਜੇ ਤੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੂਰਾ ਵੱਜਦਾ ਧੂਰਾ ਇਸ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ Ek nichave, but in all this dancing of the entire universe and all mortals and all creatures, ek nichave. One, the one Lord is the one who is making all dance. Ek pavave, he is the one who makes people, everyone go around in circles. Ek ai jai hoy tura, he is the one who is actually allowing the entire play in which one comes and goes and becomes dust again. Kaur Nanak, so bor na nache. In all this dancing which he says, so bor means modke. Modke only nachada keda? Jis guru pete pura. Jera pure guru de naal mil jave na surta de vich, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ. In other words, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ. He is now at one with the Guru. He becomes united with the Guru. The next shabd, Guruji says, the focus should be on the one within you and in all creation. Oankar Ek, the one who created all creation, Oankar, or Ekwa. Tone Ek, and there is one mystical sound, Karan, Kita Pasao Eko Kwao. Eko Raag Alape, and only one Raag, one tune, one hukam applies to all. Eko Raag Alape. Eka Desi. Desi is country. There is really one country because one ruler. Ek Dikhave, and he will show you that he is really one. Eko Reabhyape, and one is pervading everywhere. See, there are so many in the Sangat here today, but in all the Sangat, one Lord is pervading. Uhuya, Ekiya, Vatraya Saryam vich.
eko rya vyap hai. Eka surta. Now the consciousness which is in all of us comes from one. Eka surta. Eka hi seva. So when we do seva, apa ek di seva karni hai. Eko gurte jap hai. And this understanding comes only from the Guru. Guru Rai ye soji aunदी है कि एक दी सेवा करनी है. Now, Guruji says those who sing the praises of this ek, palo palo re kirtaniya, bada changa wa, bade bhagan wala wa, jehड़ा kirtan karda. Now, kirtan is not someone who just sits with a vaja and plays the tune and the tabla. Kirtana means jehड़ा udi kirta karda. Anyone who sings his praises. All of you sitting here are actually thinking of God. ਉਹਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ. ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ. ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ. ਐਂਡ ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦ ਸੁਆਓ. ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨਾ, all the various entanglements of Maya, leave them aside and sing of his praises. Swami Swarth, jada rasva, all the tastes of Maya, you leave them aside and now focus only on the Lord. Sing of his praises. Now, again then Guruji uses the imagery of the kirtaniya within the body. Panch bajitar kare santokha. Oh, Panch bajitar. Panch Bajitar actually is 5 Devi Gun. Just like you have 5 evil passions, Kam, Krodh, Lomo, Ahankar. On the opposite end, we also have 5 godly Gun. Sat, Santokh, Daya, Taram, Te, Tiraj. Panch Bajitar Kare Santokha. When these 5 qualities, these Gun, virtues of God reside in you, they will give you Santokh, they will give you contentment. Sat Sural hai Chal. And the 7 notes which we find ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨੀਸਾ, they will now work in unison. They will now come as an orchestra which is without a wrong note at all. Sat surale chale. When you get santokh and you have the 5 gun inside you, sat santokh daya taramte tiraj, everything now works as a orchestra in union. Baja मान तान ताना पावना बिगा काले. जो भी सुर बजाਉਂਦਾ ना, आपदा तान जोर छड़ के ना, बाजा मान तान तज ताना. He now doesn't act in home, pavna binga kale, and he doesn't walk on a path which is vinga. He walks on the path of his hukam, pavna binga kale. Pheri per na hove kabhi ek shabd band pale. And jada evita kirtanya hove na, one who sings the praises of the Lord, who enshrines the 5 godly virtues within himself, and who does not act in home. Pheri per na hove kabhi. He does not have to come in pair. He doesn't have to come in cycles again. Ek shabd band pale. Because he has now united himself with the ek shabd, ek Vaheguru de shabd de naal, aap de naal ban liya aap de naal, padle ban liya aap de naal. Nardi narhar jai hadure. Nardi. See, Narada, there are 2 Nards which are mentioned in Gurbani. One is Muni and one is a Rishi. Nard Muni, Guru Nanak Dev Ji uses the word Nard in many senses in Gurbani. In Raag Asa, he says, Nard nache man ka pao. Nard was a very, what do you call, a person who used to carry a lot of tails. Nard Rishi. Nard Muni, sorry. And Nard, there are Rishis, there was a time when he came and spoke to Vishnu and said that no one is more sincere in his love for you than me. And Vishnu said, no, look at the poor shopkeeper there, he thinks of me 24 hours a day. So Nard said, how can that be? So Vishnu said, okay, I'll give you
a cup of oil, and I want you to walk around this mandir 5 times, and let's see whether you can remember me or not. So Narad went round, and as he went round 5 times, after the 5th time, he answered to Vishnu and he said, I couldn't remember you because I kept on concentrating on the oil, making sure it doesn't drop. So Guruji using that, Nardi Narhar Jaan Hadure. So Nardi jehdi live lagi na, jive o tel de vich na, with that amount of concentration na, remember ke Jaan Hadure, remember God is always Hajar Najar. Kungar Khadak Tyag Visure. Kungar jehde kungru bande na, the anklets, the ankle bells, Khadak, the tinkling of the ankle bells, Tyag Visure. So when you sing of his praises, you get rid of all kinds of visur, of fikr, get rid of all anxieties. Sehaj Anand dikhave paave. And when you get rid of anxieties, what happens? You get Sehaj Anand. You get internal bliss and poise. Dikhave paave. You find all your dramatics, your acting is now in Sehaj Anand. It's in poise and peace. A nirtakari janam na aave. Such a dancer will not have to come again into this world. Be born again. He will not be reborn again. Jeko apne thakur paave, and anyone who is pleasing to the Lord, kod mad a kirtan gave. It is such a rare person who is pleasing to the Lord, who engages in true kirtan, truly singing his praises. Saj Sant ki javo take. So Guruji says, Saj Sangat da sahara leke na, ko nanak this kirtan ek. Go to Saj Sangat, sing his praises, and only sing of ek, the one Lord, sing of his praises. Hanji. So this Shabd is not about kirtanyas as you see in Gurdwaras. Anyone who sings the Lord's praises is a kirtanya. The next Shabd, Guruji says, there are different practices by different religions. At the end of the day, the issue is this. Have you recognized his hukam? Have you recognized him as one? Guruji says, Koi bole Ram Ram, koi Khudai. The Hindus speak of Ram Ram. The Muslims speak of Khuda, Eka Khuda. Koi seve Gusaiya. The Muslims refer to him as Gusai. Hindus refer to him as Sai, Gusaiya. Koi alai. The Muslims refer to him as Allah. Guruji says, these are different ways of remembering him. Karan, this Lord, the essence of him is O Karanwa. Karan te Kareem. O bada bakshindwa. He is very generous and very merciful. Kirpa ta Rahim. He showers his grace and mercy upon us. Bada meherwanwa. Koi nave tirth, koi haj jaye. Some go to the places of pilgrimage, tirthate jandeya. But the Sikhs have been told that no, you don't have to go to tirth to bath. Antargat tirth mal now. Go deep inside. The place of pilgrimage is inside. Go deep within yourself. Cleanse yourself within. Antargat tirth mal now. And koi nave tirth, koi haj jaye. Some go to pilgrimages in Mecca. The Muslims do that. But the Sikhs have no place of pilgrimage. You can visit the Gurdwaras and the Guruthams for their historical value and also to connect with history and make it alive that this is where the Gurus preached Naam. It's good to visit Gurutham and to connect with the historical places, but the Gurus keep on telling us but because you have visited the historical place doesn't make you that you have visited a tirth and you have cleansed yourself. No. The cleansing is only through Naam, through Bani. And the same Sadhguru gives Prakash here as Sadhguru gives Prakash in Harmandir Sahib. So your cleansing can be here also. So, koi nave tirth, koi haj jaye, koi kare puja, koi sir nivaye. Koi puja kar de Hindu, koi मस्जिद में जाके नमाज पढ़ दिया ते सिजदा कर दिया सिर निवा दिया कोई पढ़े वेद हिंदू वेद पढ़ दिया
कोई कतेब, द मुसलमान कतेब पढ़ते हैं, कोई उडे नील, कईयां दा पहरावा नीला पहरावा, कोई सफेद, कोई चिट्टे पहरावे पा लिया, कोई कहे तुर्क, कोई मुसलमान कहते आ आपदे आप नूं तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई कहते मैं हिंदू हाँ, कोई भाषा इस्पिस्ट, some yearn for pist. Pist is Bahisht. This is the Muslim paradise. Firdaus, Bahisht. Koi Surg Hindu, Indra da Surga. Some look for heaven. Kaunan. See, Gurbani tells us all about heaven, hell, talks about a lot of these things which are present. They are there. But we don't desire to go to heaven, not to hell. We don't desire that. We just want to be with the Sadguru and be united to God. God is beyond heaven, hell, beyond all these countings. Koi bhasha pist. Surg narte mereo Sadguru ke prasad. So Guruji tells us that I don't desire hell, neither do I desire heaven. I just want to be with God. चरण कमल की मौज में रहो अंत आराध. कोई भाषा पिष्ट, कोई सुरगिंदु, कौन नानक जिन हुक्म पछाता. You have to understand his hukam. Now his hukam is written inside all of us. Because हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल. All of us have various hukams which we have to follow. And as you go deep inside with Bani, you will know how I'm supposed to do this, I'm supposed to go there, I'm not supposed to go to the left, I'm supposed to go right today. अंदरों हुक्म जिसे कोई हुक्म की पहचान आ गई ना, कौन नान जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता. You will understand God's mystery if you understand His hukam. Which hukam is written inside you. तेरे नाल लिखा होया. Then Guruji tells us what happened when one dies in the next shabd. Ramkali Mela Panma. Pavana mein pavan smaya. The breath which you are taking will then go and mingle with the air outside, with the wind outside. Jyoti mein jyot ral jaya. Jedi teri jyot na, the life force inside you, will merge with the jyoti. Now, we come across this word very often, jyoti, jyot. Jyoti means jehda jyot jagaun wala, jyoti. Not jyotisha, jyoti. Jyoti is the one who lights the divine spark of life in all of us. Jyoti is the one who creates the life spark. Huh? So sadi jyot us jyoti vich mil jandi hai. The life spark flies away from you and unites with God Himself. Mati mati hoi ek. The body mingles with the dust. And Guruji says, someone who cries when someone is dying, when dies, Rovan har ki kavan take, the one who is lamenting and wailing, ki kavan take, is he eternal himself? One aapne marna kite? Ki ronde ho? Kaun mua re kaun mua? Who has really died? Guruji says, Brahma Gyani, Brahma da gyan leke na, use God's wisdom, mil karo bichara, try to remember this and reflect upon this. Ye to chalt paya, when someone dies, ek chalt paya, it is actually a manifestation of his lila, of his play, of his wondrous play, which has actually manifested himself, that this person has shed his mortal body and his jeev has gone. Agli kish khabar na pai, what is in store for you is not known. Of course, those who are ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, and who become ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, they become merged into God. When they leave their bodies, they are already merged. So the merger is just actually shedding the body and being with God always. But those who have not merged with Him, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ. ਅਗਲੀ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਣ ਹਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਿਧਾਈ. ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ. ਪਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ. We have all kinds of superstitions, misconceptions and bondages. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ. ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ.
ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਬੈਬਲ ਐਂਡ ਦੇ endure all kinds of nightmares. ਸੁਪਨ ਪਿਆ ਪਖਲਾਏ ਅੰਧ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ. This is actually his play. Avat javat hukam apar. This is his play that you have to come and go. And this is part of his infinite hukam. Avat javat hukam apar. And the jeev, as far as the jeev is concerned, na ko mua na marne jog. The jeev does not die. Ne binse abnasi hog. Jeevatma asal de vich kite marda nahi. And Guruji says, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕੋਬਲ ਜਾਓ. ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ all kinds of perplexed misconceptions as to death. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ. ਗੁਰੂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ. ਨਾ ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਇਆ. See, when you say na ko mare na ave jaya, no? Earlier Guruji has said avat jaat hukam apar. Now he says nobody dies and nobody goes. What Guruji is saying is neither spirit nor matter can be destroyed. It can change form only. Even science tells you that. You light a candle and you put a cover on top, you'll find the oxygen gets burned and it gets transformed into carbon. And it is just a change of form only. Neither spirit nor matter, energy nor matter cannot be destroyed. It can only change form. So na ko mare na ave jaya. Ko nan gur param chukaya, na ko mare na ave jaya. Ramkali Mela Panjma. Guruji says, sing his praises. You can go beyond time and that. Jap Gobind Gopal Lal. So the naam japna jeda Gobind wa. Go Tarti, Bind means Prakash, Tarti da Prakash. Gopal, Tarti nu palan wala. Lal means jeda pyara wa, bahut pyara wa, the beloved Lord. Ram naam simar tu jeeve. And the Ram jeda ramya hoya. Simran karke tu ji sakda. You become truly alive by singing his praises. Phir na khai Mahakal. And you will then not be consumed by Mahakal. Mahakal means badi takdi balwan maut. The great death, terrible death will not consume you if you sing his praises and you merge into the Lord. Kot janam, krodai janam, pram ayo. Patak patke, gede kha ke main aaya wa. Bade bhaag saad sang payo. See, when we read Bani, Bani tells us that before you took human form, we have come in all kinds of forms. Kai janam pai keet patanga, kai janam ka jameen kuranga, kai janam haver birkh joyo. So we have gone through many life forms. But Chirankal pai dulabde, after a long period, we have been blessed with a human body. And it's not easy to get this human body. Bade Pag, and in this human body, it is also very fortunate. Bade Pag, when you go to Saad Sangat, Bade Pagiya, Apa Bade Pagiya, Jinanu Guru ne Saad Sangat Bakshiya. And Saad Sangat de vich, you must be in the Sharan of a Pura Satguru. Bin Gur Pure Nahi Udar, without a Pura Satguru, you can never ever get salvation. Baba Nanak Akhe E Bichar. These are the word Baba is a Persian word, it means wise elder. Guru Nanak Dev Ji tells you, after deep reflection, Baba Nanak Akhe E Bichar, Bin Gur Pure Nahi Udar. We now come to Ramkali Mela Panjma Karduja. Guruji says, now this series of shabds starts with Guruji speaking to a yogi. Now there's a Sakhi attached to this shabd. The Sakhi says the yogi was very egoistic and very boastful.
He claimed he had a very high avastha, and to really connect on a very high level, the yogis used to take snorts of alcohol to get to a very high avastha according to them. The gurus never agreed with taking alcohol to get higher. And he met one Sikh by the name of Bhai Tiloka. Bhai Tiloka said, "Tu ki pulya patkya phirde jogiya? Let me take you to my Guru, Guru Arjan Dev Ji Padsha, and he will take away all the cobwebs from your mind and put you on the right path." The yogi said, "No, I'm not going to meet your Guru. From what you tell me, your Guru is hardly even 40 years old and he's a householder. How can a householder teach a yogi?" And he fell into a trance. And when eventually Bhai Tiloka brought the yogi to Guruji, the Sakhi says, Guruji Sahib ne ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾ। Khat bhi eka baat vakhane. Khat means Sheh Darshan, the Sheh Shastras. They also speak of the one Lord. Das asti mil eko kaya. The 18 Purans also speak of one God. Tapi jogi pe. And yet, despite all the scriptures telling you about one God, yet, with all the scriptures and this gyan available, maujood hua hai sara Rabbi gyan, tenu phir bhi soji nahi aunਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀਆ। Tapi jogi ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ, kinkri anup vajay. Now the yogis use the word kinkri. So, see, they will pierce their ears at a particular angle, at a particular nerve to say that anad vajay, kinkri vajay, like a harp. Guruji says, the Lord's kinkri, the anad vajay, na kinkri anup vajay. बड़े अनंत वाजे ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ, हे ਨਸ਼ੇ ਹੋਏ हे ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਕਰੀ ਨਾ, his celestial sound current is resounding through the universe. Oh, you drunk yogi, in your intoxication you do not know this one Lord. Guruji says, when he talks about uchi avastha, see, the Gurus have used time, the yogs, to always mention about avastha. Satjug, Treta, Dwapar and Kaljuga. In Paromela Panjma, at Ang 1131, Guruji says, Kal me pret jini Ram na pachata. Kaljug de vich o pretwa, Poot pretwa, jinhone Rab nu nahi janiya. Satjug Paramhans bichari. And those who are in Satjug, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, they are in Satjug avastha. Dwapar, Treta, Manas, Varte. And Dwapar and Treta are just normal humans, mortals. Villa home mari. Kal me Ram naam vadiyai. Jug jug gurmukh eko jata. Vin nave mukt na pai. So the Gurus have always used time in Gurbani to refer to one, and it refers to avastha. Prathme vasya sat ka kheda. बड़ी खुशी आनंद ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀਗਾ। ਤ੍ਰਿਤੀय में किश ਪਿਆ ਦੁਤੇੜਾ। ਤ੍ਰਿਤੀय में ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣਾ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, when you go into maya, when you dabble with maya or you get involved, engrossed in maya, ਫਿਰ ਕਿਸ਼ ਪਿਆ ਦੁਤੇੜਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਏਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦ ਦੂਜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਕ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਤ ਪ੍ਰੋਏ ਮਣੀਏ। So Guruji is addressing the yogi, and yogis will carry a mala with them. God has strung the entire creation into a mala. Ek hai soot. Soot is dhaga. Proye maniye. In the dhaga of his hukam, he has woven the entire universe. Ganthi pin pin taniye. And kai tarah diyan ganda paiyaan with all the mala. Different kinds of people
are in his hukam. Chinese, Indian, whites, Negroes, different colors, but of one origin. Ganti pen taniye. Fifty mala bob with the pie. Now within the mala, within the hukam, the beings move about. Bob with the pie. Kai trade half pav de which was there. Kincha sut ta ai thai. And when he pulls the mala together, you find life is snuffed out and you go back. Kincha sut ta ai thai. चौमे एक मठ है किया चारे जुगां दे विच एक ही मठ एक ही मंदिर वा दसवां द्वार वा ते बिखड़े थान अणक खिड़कियां. In all the four yogs, all mortals have a daswaं dwar, and te bikhde than. It's a very difficult place to access. अणक खिड़कियां कई तरह दे रस्ते आ religions are there. We show some glimpse of him. खोजत द्वारे आया घालना करदा ना सिमरन करदा पाठ करदा सेवा करदा कीर्तन करदा मैं खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया. ते गुरु साहब कहंदे आ जोगिया ये शराब पी के नहीं तू उत्थे पहुंच सकदा. खोजत द्वारे आया उन्हें लभदा हौली हौली अंदरों नाम दे नाल सत्संग करदा सेवा करदा ना ता नानक जोगी महल कर पाया. हे जोगिया फेर ही तू आपदे शरीर घर दे विच तू उहदे महल नूं पहुंच सकदा वां दसवें द्वार दे विच. इयों किंगरी अनूप वाज है. इस तरह ना उसकी अश्चर्य किंगरी पूरी धुनी वजदी आ. सुन जोगी कह मन मीठी लागे. सुन जोगी, you are a yogi. God is also referred to as a yogi, but he is in Sun Samad. Sun Samad ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਉਹਦੇ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਸੁਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੇ. Next Shabd Guruji looks at man's body. He looks at a yogi and he talks about the framework of the body in yogic language. रामकली में तागा करके लाई ठिगली. ठिगली मीन्स टाकी. द शरीर रूपी जड़ी टाकी ना जड़ा लीड़ा वा कई तरह के धागियां दे नाल बनी हुई है. विद मैनी muscles and with many sinews and bones and with many nerves. This entire fabric of the body is sewn together. तागा करके लाई ठिगली लो नाड़ी सुआ है अस्थि. ते नाड़ियां सुआ वड्डी सूई दे नाल ना अस्थि हड्डियां दे नाल जुड़ी हुई आ. अंबे का कर डंडा तरया. अंबे is पानी. Now this entire body is resting on water. 70% of the body is water. अंबे का कर डंडा तरया. Danda is a pillar. Kya tu jogi garbe karya? And that is the nature of your body. And jogiya tu bade hankar de turya phirda. Looking at the basic fragile framework of your body, what are you so proud about? Jap nath din रहना आई. नाथ वाहिगुरु ना ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇਰੀ ਖਿੰਥਾ ਦੋ ਦਿਹਾਈ. The best body cloak which you wear is only for a few days. ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੋ ਦਿਹਾਈ ਆ. ਗਹਿਰੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ. And you smear ashes on your body. ਗਹਿਰੀ means ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਮਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾਂ. ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰੀ. Now you wear mundra, you wear earrings, we say they connect you with God and you are detached from the world, but still in reality to meri teri, this is mine, this is yours, to meri teri ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਮੰਗੇ ਟੁਕਾ ਟਿਪਤ ਨਾ ਪਾਵੇ. ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾਚੈ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ. ਨਾਥ ਮੀਨਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ
ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। See, Gurbani is very dynamic, very pragmatic. In many ways like this, the Sikhs are told that we should not be begging for a living. You find very few, I can't think of any Sikh beggars, because the Bani tells us we should not be begging from anyone. So it seeps down into our inner conscience ਕਿ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਛੋੜ ਜਾਚੇ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਨ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਆਸਨ। Now you sit in a particular asana, they call it, in a particular lotus position and things like that. But your chitta, your heart is still very restless. So you may be sitting motionless for hours, but your mind and your heart is not at peace. Singi vaje nit udasera. And although you blow your horn to represent Anat Vaje, yet, and these Anat Vaje are supposed to be full of joy, bring you kheda, but yet you are very morose and sad inside. Gur Gorakh ki te boj na paai. The Guru te Gorakh, Gorakh ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵਾ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੇ ਖਿੰਥਾ ਨਾਮੇ ਬਸਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖਿੰਥਾ, ਤੇ ਜੋਗੀਸ will wear pest coat which is called like khintha, name bastar. Give me the clothes of Naam. Jan Nanak Jogi Hova Asthir. And when you clothe yourself with Naam, you become eternal. तो पक्का हो जाएगा। यूँ जपियो नाथ दिन रहन आई, इस तरह ना जपद्या रात दिन हुन पाया Gur Gosai. You'll find you then merge into the Shabd Guru, who is God himself. Hun paya gur gosai rahav duja. Ramkali Mela Pinma. Guruji has given 2 shabds about yogis, which are, and Guruji spoke about misled yogis who achieve nothing without Naam. Now Guruji speaks to an ordinary human who does Naam and who manages to attract the grace of God. Guruji talks about a Gurmukh. Gurmukh ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸੋਈ, he is a real doer, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਣ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਈ, he has full faith ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ, he must have confidence that God in whom he has put his old asra is sugad sujana, he is all knowing and wise. Gurmukh ਮਿਲਿਆ ਰੰਗ ਮਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਰੰਗ ਮਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ, Guruji says, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਨਾ, the joy of Bani, that is known as har ras. Then har ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, those who don't get the inner delight, the delicious taste of Naam, Guruji says, ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੈ ਵੇਲਾ ਡੀਠਾ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ, God's jyot, his divine spark is nirmal, is pure and immortal. Amrit Har Naam. And this nirmal jyot can be found in Harida Naam, which is Amrit, which makes you eternal. Pivat Amar Payne Kaam. As you sing, as jiven jiven ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, Payne Kaam. Ne Kaam means you become detached from worldly desires. Kaam, desires. Not only lust here, kaam means desires, kamniya. Tan man sital aganivari. The body gets settled. Tan te man hun sital, thanda ho gaya.
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਸੀ ਨਾ, they get snuffed out. The fires are extinguished. ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਗਾੜੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਮੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਮੀ ਬੋਡੀ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਿਵਾਜਿਆ, with my Guru's grace I, a lowly being, have been exalted. Khol ki vara mahal bulaya, and as you give me your grace, you call me to your mansion, to your palace, in your daswaं dwar. Khol ki vara mahal bulaya, jaisa sa taisa dikhlaya, and you show me the true reality of yourself. You show me your jyot. Kau nanak sab parda toota, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੋਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਉਠਾ, and now there is total merger. I now belong only to you. I have become ਸਚਿਆਰਾ। ਹੋਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਉਠਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟਾ, ਹੋਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਉਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। The next Shabd Guruji tells us that you do not merely pray to the Guru. The Guru is alive and actually the katha, the doer. This Shabd speaks of the situation where the Guru actively guides the Sikh towards liberation. See, very often we find nowadays, especially Jade Vidwan, they come up with all kinds of arguments and fantastic logic and say a Gyan Guru. No, Guru Granth Sahib Ji Maharaj is not only Gyan Guru. He is much, much, much more than that. He is infinite. He is Nirankar Ji himself. Gyan is enlightenment. The Guru is just not giving you enlightenment. The Guru is, Gurbani tells us, the Guru is at Ang 30, Sri Raag Ramkali Ang, Guru Amar Das Ji tells us, Jiha Sadgur kar janya, teho jiha sukh hoy. If you think the Guru is Gyan Guru, you will only get Gyan only. But if you think and you accept that the Guru is Nirankar himself, you actually get access to Nirankar. ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਸ ਐਸਾ ਮੁੱਲ ਨਾਹੀ ਭਾਵ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ. And you cannot just say that this is just Gyan Guru. There are many Shabds which tell us about the majesty and the power and the infinite reach of the Satguru. Satguru at Ang 1142, Paromela Panjma, Guruji says, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता. He writes my destiny. He not just gives me enlightenment, he can write and wipe out your karmas. गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहा. सतगुर मेरा मार जीवाले, he can actually kill and revive you again. He is all the power. Sadguru तो मेरा पार ब्रह्म, not just ज्ञान. सतगुरु मेरे की वड्याई प्रगट पई है सबनी थाई. सतगुरु मेरा घर दीवान, मेरे घर दे विच दीवान लाउंदा. He holds court within me. सतगुरु कह हौसत बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया. He said, I am always grateful to my Guru who has showed me the path towards God. जिन गुर सेव्या this Pavana Vyapa, and anyone who serves the Guru, all his fears will vanish. Jin Gur Sevya
ਤਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਤ ਬੇਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਵਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ, the eternal Lord and the Guru, there is no difference between them. So we cannot say the Guru is just Gyan Guru. Guru is everything. He is infinite. He is just like God himself. So Guruji can, and this is Shabd Guru. So Guruji talks about the Satguru. Sevak layo apni sev. Satguru now the Sevak nu of the Seva Jalonda. Any Seva of the Satguru. Amrita Naam Diyo Mukhudev. And what does the Guru give you? He gives you Amrita Naam. He gives you Naam. Amrita Naam Diyo Mukhudev. Sagli Chinta Aap Nivari. And as you keep on doing his seva, as you keep on reciting his Naam, he takes away all your anxieties and fears and all worries. This Guru Ko, because these anxieties, so long as they are there, you cannot fully concentrate on your love with God. They will distract you. Sagli Chinta Aap Nivari. This Guru Ko, Hansad Balhari. तो ऐसे गुरु को मैं सदैव बलहार जाना. I am ever grateful to my Guru. Kaj hamare pure Sadguru. He completes all your affairs. सारे तेरे काज ना पूरे कर दिंदा. बाजे anad ture Sadguru. And andro na anad vaje. Unstruck music will start resounding within you. Rahao. See, unstruck music very often comes in Gurbani. We have to examine ourselves. Manu anad vaje kite sune. The thing about Gurbani is this path is very, very private. You cannot really go around telling Manu anad vaje sundeya. Because Bani tells us, as you go towards him, you will experience a lot of ताकि गल्ला कथे न जाए, जे को कहे पीछे पछताए. So you will sometimes see lots of forms, you will see past lives, you will see lots of images. You cannot go and talk about this to others because it is private to you, personal to you. He is giving you enlightenment, he is leading you onto the path. So it becomes very difficult to contain this. And if you go around babbling about it to others, you will find your images will stop there. Because home will come in, wow, main to aa ho gaya. The moment home comes in, you start losing. You regress. It takes a long time for it to come back again. So, and manne ki gat kahi na jaye, je ko kahe pishe pachtaye. Twice in Japji Sahib Guruji has said that whatever in your mind comes there, as you get these experiences, you cannot go around sharing them or talking about them or boasting about them. You, je ko kahe pishe pachtaye, you will regret later. Because regret, in the sense you will lose. So Guru Sahib kende so anad vaje, even though I posed a question to the Sangat ke, Kanyanu anad vaje jaru sunde hone. Don't answer me, don't tell me. What I want you to do is examine yourself. Do I ever listen to anad vaje? There must come a time when you start listening anad vaje. Why Guru? Or Ek Oankar, Satnam, Kartapur. It will start resounding by itself. Shabd will suddenly start sprouting. Tu mera pita, tu mera mata, tu mera bandhap, tu mera prata. It will start counting within yourself. It sounds so fascinating. And you stop for a while. Because already in the second avastha, in the Gyan Khand stage, this anad vaje aun lag pande. But then in the Karam Khand stage, the anad vaje aunde, the anad vaje are with you forever. You can't even switch it off. You can't even switch it off. It will just carry on. It'll go to a very low tempo at the but you can hold a normal conversations with friends or with anyone. But andro anad vaje vaji jange because you're already connected forever. So these anad vaje are very important. We must strive towards that, and finally, of course, to get a darshan of God. Bin har das sabo hoy tora. Baje anad ture Sadguru Raham. Mema jaki gehar gambir, the Guru na, he is gehar gambir. He is profound and unfathomable. Don't try to logic out many things which the Guru does, because he is, uska koi answer nahi pa sakda. Hoy ni hal de jis tir, jinu tiraj, jinu prosa dinda na, the Guru will bless you with total faith.
And one who gets total faith and prosa, he becomes exalted, he becomes blessed, blissful. Jaake bandhan kaate raay, sonar borna joni paaye. Rai is Raja, Guru Rajana, Vaheguru, Guru, same one. Jis de bandhan katte jaan. We have lots of karmas, lots of baggages we have. And as he cuts through the karmas, sooner born joni pa, that person will not come back again into reincarnation. Jaake antar praktyo aap, Guru di kirpa de naal jadon andro pragat ho jave na, tako nahi dukh santaap, he then does not go to any pain or sorrow. Lal ratan tis paachha, tis pale parya. ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਗਲ ਕੁਟੁੰਬ ਉਹ ਜਨ ਲੈ ਤਰਿਆ not only he saved his entire generation, his entire family saved with him. ਨਾ ਕਿਛ ਪਰਮਨਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ. The Guru will lead you to a avastha where he cuts away all superstitions and there is no dubda, there is no duja, there is no misgivings. As you start reading Gurbani, as you start connecting with the Gurbani more and more, you will give up looking at the horoscopes in the Sunday sections and all that. Because it means nothing. The one who gives you his horoscope is the Guru himself. He is the one who blesses you with good luck and with good destiny. So, Nakish Parmna Dubda Duja, Eko Ek Niranjan Puja. And the Guru leads you to the one Lord who is Niranjan, who is beyond Maya, who cannot be bought, who cannot be corrupted, who cannot be deceived in any way. Jatkat dekho aap deyal. And Guruji says, the Guru leads you to a place where you will see the very merciful Lord is always there. In every place you look. Jatkat dekho aap deyal. Kaunank prab mile rasal. Rasal means rasda kar. The source of all nectar and all ecstasy. The Lord. The Guru leads you to Him and unites you with Him. The earlier Shabd spoke about what the Guru does for you. This Shabd is spoken by a Sikh who has been transformed by the Guru's grace. Guru di kirpa de naal na Sikh te ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ. ਤਨ 'ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣ ਸੀ, ਮਾਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਦ ਡੂਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਬਾਏ ਦ ਗੁਰੂ. ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਗੋਡ ਡਜ਼ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ. ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲਾ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ. When when a loving member of the family passes away, or someone close passes away, or some terrible loss happens in the family or in business, there comes a time when you accept. After some time, you'll sort of chalk it up to experience. But Bani says, no. Whatever has happened, सिर्फ मनना नहीं, मिठा करके मनना. Oh, that's very tough. At 207, at Ang 207, सोई होवा ज्योतिष पाना अवर्ण किन्हीं कीता. He is the doer and he never does wrong. Whatever he has done is always right and perfect. So you have to accept his will as perfect and say yes. Even if dukha comes also, you say, "Ye bhi daat teri daatar." Accept his will with love. Only then can you merge into his will. If you grudgingly accept, you can never merge into his will. Then your own will will become a stumbling block to actually merging into his infinite will. You have to surrender to his will lovingly. So, तंते छुटकी अपनी तारी, प्रभ की आ गया लगी प्यारी. जो किश करे सो मन में रह मीठा.
So that's, as I just said, जो कुछ वो करता ना मेरे मन में बड़ा मीठा लगता, because the Sikh has been transformed by his grace. ਤਾਂ ਇਹ अच्छे से नैनो डीठा, when he accepts मीठा करके मानता ना, then he sees बड़े बिस्माद होके कि कौतक ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, he sees his wondrous actions of the Lord. ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਾਣੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ. ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਾਣੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਏ, ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝ ਗਈ ਆ. ਨਿਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੀ, my hold on things. Gurpura liyo samjhaya. The Guru has given me understanding that nothing is mine. जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए. It is all his. कबीर तू मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा. And you keep on saying तेरा 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 ना, तू हुआ, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ. जब आपा पर का मिट गया, आपा ते पर का मेरी तेरी मिट गई ना, जत देखा तत तू. कर कृपा रखियो गुर सरना. गुरु ने मैनू आपकी शरण विच रखिया. The Sikh is saying, गुर पकड़ाए हर के चरना है. The गुरु ने मैनू पकड़ा दिते, मैनू दिते ना हरि दे चरण, मैनू हरि दी बाणी दे नाल जोड़ दिता. बीस बिसोए जा मन ठहराने, बीस बिसोए जा मन ठहराने. Now बीस बिसोए, this is बीस बिसोए is a Punjabi muhavra. It is used very often in the pens in Punjabi. It is a language used by surveyors to confirm boundaries which are properly checked and marked, measured really. So when you say bis bisoy means there can be no room for error. It is perfectly charted out. जो मन ठहर गया ना, जो मन ठंडा हो गया ना, still हो गया ना, then everything has been perfectly charted out. बीस बिसोय जब मन ठहराने, गुरु पार ब्रह्म एक ही जाने. Guru te par Brahm. Now you see God and Guru as one. Jo jo kino ham tiske das. Now the Sikh says that whatever is in creation, I am like a das, I am in nimarta. I live now in humility. Prab mere ko sagal nivas. Because he now, I find that he is residing in all. ना को दूत नहीं बहराई. I have no enemies, I have no adversaries. गल मिल चाले एक है पाई. सारे हुण खुश होके मिलते मेरे नाल वरतदे आ. जाको गुर हर दिए सुखा. जिन्हों गुरु ने सुख दिता ना, ताको बहुत न लागे दुखा. मुड़ के उन्हें दुख नहीं होता. Because now whatever the Guru blesses you with is something eternal. Not like Maya di cheez. Maya di cheez is something which is perishable, which is only for a short while. जो गुरु दिंदा ना बख्शीश सदा अटल रहंदी आ. आपे आप सर्वप्रितपाल. Guru himself cherishes all. नानक रातो रंग गोपाल. गुरु साहब कहंदे आ मैनू गोपाल दे रंग दे विच प्यार दे विच उन्हें हुण गुरु ने मैनू भ्यों दिता. I am now drenched with God's love through the kindly grace of the Guru. Now sometimes you come across very learned people, they have acquired lots of knowledge, become acclaimed as a Vidwan, and in Sikhi, in Gurbani, there is no place for Vidwanta, for Panditai, for cleverness or being learned. What Gurbani tells us is prema bhakti, loving devotion to God. That is really the crux of the matter, not your learning. This shabd is addressed to a pandit, a religious scholar, very learned, but not wise at all or spiritual at all. We must all guard against this, because we read a lot and we think we are very clever. No.
The real test is whether you have prema bhakti in you. Ramkali Mela Panjma. Guruji is talking about Pandit Mukte Padta Tika Sahat. He reads the scriptures and the commentaries. बड़े पढ़दे बढ़दे टीके पढ़दा वा. Heze Ram nahi पूर्ण रहत. In his mind, in his heart, the Lord doesn't dwell. But पूरी रहत बाहर नहीं रखदा. धोतियां पा के रखदा. He puts his janeau, he puts everything fully. Heze Ram nahi पूर्ण रहत. उपदेश करे कर लोक दिड़ावे. लोकां नू बड़े उपदेश कहंदा कि मैं आ जांदा ऐदा करो पर अपना कया आप ना कमावे. पर whatever he says आप ओदे ते असल नहीं करता, अमल नहीं करता. So Guruji in the Rahau tells the Pandit Ved Vichar Pandit. Hey Pandit, the Malay word Panda comes from the word Pandit. If you look at Malay word Pandita actually comes from the word Pandit also. Pandita we call. Pandit, Ved Vichar Pandit, O learned scholar. Ved Vichar Pandit, hey Pandita. Guruji uses the word Pandit 3 times in the Rahau. Pandit, Ved Vichar Pandit, Man ka Krodh Nivar Pandit. Now the word Ved you will notice, Babin Lam Dada Onkad. Now the word Onkad there means there is one. There are 4 Veds. So Guruji is not referring to the 4 Vedas of the Hindus. Here Ved means scriptures. Jithe naam japya janda va. Listen to the scriptures. Pandit, Ved, when we read Ramkali Sadhu for example, Guru Amar Das ji says ke Keso Gopal Sadiye. And then talks about the Puran. Othe Puran also you will find there's a Onkad under Puran. Puran ta 18 ma. If he is referring to 18 Puranas, there will be no Onkad there. Puran means the earlier scriptures. ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ. ਮਨ ਕਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ. Reflect upon the scriptures, O learned scholar. Now the constant use of Pandita is rather mocking, because he considers very clever. Guruji keeps on Pandit, Ved Vichar Pandit, Man ka Krodh Nivar Pandit. You call this a very clever. Tu ajera manda jeda gussa na, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈ ਰਹੋ. ਆਗੇ ਰੱਖ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ. So Guruji, even though using the word Pandit, Guruji is saying you are actually spiritually ignorant, despite all the name you have and all your learning. आगे रखो सालग्राम. तो आपदे गाड़ी ना एक सालग्राम. Salgram is a they call it a pumice stone. It's a stone god. Is a representative of Vishnu. Vishnu di murti ro rakhna gadi. Man kino, there is Visram. So even though you have the stone god in front of you, the Deva in front of you, but your man has gone in all 10 directions. So he's not even focused on the murti. Tilk chirave, pai pai. So to tilk chirave, you put a mathe te tika launa tu, pai pai, te dandot karda. You fall at the feet of the stone patthar, the murti. Log pachara and kamai. To lokanu tu bada tu dasta akar, par tu jade kam karda, anne kam karda, hanere vich tu turya phirda. Khat karma ar asan toti. She karma. The 6 religious rituals you have, they've got funny, strange rituals. Very difficult actually to follow them. Ar asan toti. Toti, upar tu baithta asan laake. Paghat grah padai nit pothi. Te bade ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਠ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ. You go and read, do your part, puja there in the homes of the wealthy.
You see, Guruji is saying, jede pandit hunde na, they will go to the wealthy homes, but jeda poor person hove na, jeda shack vich rehanda, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ. ਪਾਕਟ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਮੰਗੇ ਵਿਭੂਤ, ਆਪਦੇ ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਵਿਭੂਤ. ਵਿਭੂਤ means swa. Actually here swa means maya. ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਫੇਰ, ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, which is really dust in origin. ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਡਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ. And now Guruji tells us who is a real Pandit. So Pandit Gur Shabd Kamaye. He is truly a Pandit, a learned Vidwan who amal karta ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਮਲ ਰਹਿਣੀ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਸੋ ਪੰਡਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਉਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ. And he removes all the shackles of Maya from himself. Chatar Ved Purn Harnai. Chatar means char Vedna, Purn Harnai. And he regards whatever is in the four Vedas, and in the four Vedas he only recognizes the name of the Lord. Nanak tiski sarni pae. ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਏ. In the next Shabd, Guruji says, we all strive for his nazar, his grace. When he gives his grace, this is what happens to the Sikh. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, this is what happens. How the transformation takes place. And what transformation has taken place is described in the Shabd. ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ. Millions of troubles and obstacles can never come near you now. ਅਣਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਰ. ਐਂਡ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਚੇਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਣਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ. ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ. ਅਣਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ. ਪਾਪ ਨੂੰ, ਦ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. See, when you get his grace, see, an ordinary mortal, he is troubled by kaam, krodh, lobh, moh, hankar. These are the 5 evils which will disturb us in many, many ways. But when ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, these 5 evil passions will be transformed into something very positive. Krodh, which was anger, now becomes bir ras. You become a surma, you become a true warrior who stands up to fight for the downtrodden. ਉਹਨੂੰ bir ras ਆ ਜਾਂਦਾ instead of krodh. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, earlier it was attachment on a physical level, but the moh now has been transformed is Sachi Preet, hum tumse jori, tumse jor, avar santori. So the transformation is totally different. Same passion, except it's now used in a positive sense. And lobh, Guru Sahib can say the lobh is a greed. In Raag Gaudi we have one shabd, apne lobh ko ki no meet. Use the same greed you have to unite with God. Have greed for Naam, have greed for God. And mukt padarth, then sab kuch dinda va. As you have, instead of greed for worldliness, have greed for, be greedy. Then under pokho nahi chahiye, or to pokhe khaye chale dukh, so that you can unite with God. And as far as kaam and krodh, see, kaam and krodh are very strong passions. You'll find that when you have calm inside you, when you're full of lust, you'll be looking around for some ways to spend your lust or your anger, calm and krodh. Guruji tells us that as you keep on engaging in the Guru's seva, as you engage especially in physical seva of the Guru, you'll find that this evil passions of calm and krodh become subdued and they become
and the energy now becomes positively used. Guruji says, Kaam Krodh at 1170 Ram, it's in Raag Basant da Shabda, if I'm not mistaken. Kaam Krodh doy karo basole, godo tarti pai. You know, basole is a belcha. Use it as a spade to literally work on the earth, on the body earth. In other words, use physical activity. ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਕਿਊਮ ਮਾਰ ਜਾ. Do something physical and you find that your energies, your evil energies get dissipated. काम क्रोध दोय करो बसोले गोडो धरती पाई, जो तुम गोडो त्यों सुख पाओ किरत न मेटिया जाई. बगले ते पुन हंसला होवे जे तू करे दयाला, बगले ते पुन हंसला होवे जे तू करे दयाला. Pranat Nanak Dasan Dasa Daya Karo Dayala. So the evil passions now have been transformed into positive energy. Jako Maya Anak Pap Take Panihar, Jako Maya Pai Kartar, Jise Te Kartar di Mehr hogi na, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਆ. ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਜਿਸ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਣਗ ਯਤਨ ਉਹਾਂ ਕੇ ਸਰੰਜਾਮ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਸਰੰਜਾਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਰਹੋ ਕਰਤਾ ਰਾਖੇ ਕੀਤਾ ਕੌਣ? ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ. ਵਾਟ ਕੈਨ ਹਿਊਮਨਸ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ. ਕੀੜੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਿਰਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ. A small tiny ant like human can win over the entire world when the Lord's grace is with him. ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਬਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ. ਬਲਬਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਤਿਨੀ ਕੀਆ ਜਪ ਤਪ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਧਿਆਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ. ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਭਗਤ ਸੋਈ ਕਲਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਵਾ ਇਸ ਕਲਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨ. ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆ ਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾ. ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ. ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, we have covered until Ang 888. It's 8:30 now. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ. ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ. ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁਲਕ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.